हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस। बायजूस में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज स्नेहा शर्मा एंड today we are going to have a very interesting discussion session which is based on NEET 2020 paper. All right, now before we actually go into the questions, let us have a very quick overview of what NEET examination is like and what NEET paper is like. So basically NEET examination, this paper is a multiple choice question based examination where you have questions from physics, chemistry and biology. Physics, there are 45 questions. Chemistry, there are 45 questions. And biology is like 50% of the paper, which is 90 questions. Now, this syllabus is basically based on both 11th standard as well as 12th standard syllabus. All right. But there is no fixed rule like the questions would be 50% from 11th standard and 50% from 12th standard. Or in case of botany, it's not like 50% of questions are going to be from botany and 50% questions are going to be from zoology. But the number and the weightage is kind of equally distributed across 11th and 12th standard with small few number of questions here and there. Okay, so when you try to attempt this examination, when you try to attempt NEET examination, it is always going to be better if you know this exam. Okay, when I say know the exam, you need to understand what kind of questions are asked, what kind of syllabus is covered, especially when you talk about the paper, this NEET examination in recent years, the syllabus is pretty much defined by the NCERT syllabus. Okay, the questions are quite based on NCERT syllabus, unlike previous years when AIPMT, All India Pre-Medical Test, used to happen, where the questions used to be quite a few in number, where the syllabus was actually out of the textbook, right? But in recent years, like I'm saying, जो questions आते हैं वो काफी ज्यादा हमारे syllabus पे ही based होते हैं. In fact, specifically speaking, अगर हम NEET 2020 की बात करें तो only 2 questions were there which had information which was slightly away from the textbook. But most of the paper was based on the NCERT content, on the NCERT syllabus. ओके तो हम एक बार ये क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले एक बार बहुत ही जल्दी से एक क्विक एनालिसिस करते हैं कि हाउ हैज द ट्रेंड बीन फॉर लास्ट 5 years. Okay, let us begin with 11th standard syllabus first. So when you look at the 11th standard syllabus, we know there are 5 units in it. There is diversity in the living world, right? Then there is structural organization in the animal, in both animal and plants, or where you have morphology chapter, where you have animal tissues chapter, etc. Then there is cell structure and function, which is a very basic but highly informative chapter and unit. Basically chapters which are included in this unit, right? Then we have plant physiology. It's all about mineral nutrition, respiration, photosynthesis in plants, transport in plants. Very interesting but very important also. In fact, this year, that is in NEET 2020, the number of questions that came from plant physiology was almost 10, right? So it is basically having a good weightage compared to the amount of information that has actually gone into these chapters. Okay, then comes human physiology. Of course, one of the most interesting thing for most of the students, सब बच्चों को human physiology पढ़ना बहुत पसंद है, and क्यों ना हो, हम सबको लगता है कि हम अपनी human body के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ें, है ना? So obviously when you are trying to attempt NEET, it means you are basically targeting an exam where you are going to qualify one day as a brilliant doctor, है ना? तो आप सब वो इसलिए ही शायद करना चाहते हैं क्योंकि आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में बहुत पसंद है पढ़ना, या आप उसके बारे में जानना चाहते हैं और आप बहुत सारे अच्छे काम करना चाहते हैं. लेकिन it's very important to understand science and biology also as a holistic approach, right? With a holistic approach. तो इस वजह से आपको स्पेशली जब ये एग्जाम टारगेट करना है तो सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं बट बाकी चैप्टर्स पे भी फोकस करना जरूरी है. ओके, बट नेवरदलेस यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा है, स्पेशली इन द ईयर 2019, इफ यू सी, आपको दिख रहा है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, है ना? एट द सेम टाइम आप अगर देखें 2018 में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज आपका जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, इन सब के ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो काफी ज्यादा बेस्ड थे. एंड इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ होल ऑर्गेनिजम्स दैट आर एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड. एटलीस्ट इस लेवल तक हम अपने सिलेबस में पढ़ सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर आपको दिख रहा है इस तरीके से कि कैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज जो है बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में, बाकी यूनिट्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है. बट वंस अगेन देयर इज नो फिक्स्ड रूल, जैसा मैंने आपको कहा, इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग एवरी ईयर.
ओके आगे चलते हैं, हम चलते हैं अपने 12th स्टैंडर्ड के एनालिसिस पे, विच इज ऑफ बेस्ड ऑन लास्ट 5 years क्वेश्चंस ऑफ नीट, राइट। 2016 में हमने यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का आपको वो दिया है, एनालिसिस दिया है, क्योंकि 2016 में आपको याद होगा 2 बार नीट एग्जाम हुआ था। ओके सो कमिंग बैक हियर, यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है दैट not just in recent years but even slightly before that जेनेटिक्स के क्वेश्चंस और रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड चीजें काफी ज्यादा हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें काफी ज्यादा हैं। तो ये दोनों यूनिट्स जो हैं, जब आप 12th स्टैंडर्ड की बात करें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वंस अगेन मैं जितनी बार बोल रही हूँ कि कोई चैप्टर या यूनिट इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी यूनिट्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल एग्जाम वैसे भी काफी हद तक एनसीईआरटी बेस्ड हो चुका है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी चैप्टर, ऑन एनी कॉन्सेप्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट द होल सिलेबस। इट इज वेरी मच डूएबल। एंड जैसा सब लोग बोलते रहते हैं, आधे से ज्यादा लोग, आपने खुद ने सुना होगा, इवन दो यू आर द पीपल हु लव बायोलॉजी, बट आपने कितने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि बायोलॉजी है, याद करना होता है, ये तो रटने का सब्जेक्ट है, इट्स अ सब्जेक्ट टू जस्ट सिंपली मग अप। It is not like that. I personally hate mugging and I don't think I can do it very well. But you all would know that जब भी आप किसी क्वेश्चन या किसी कॉन्सेप्ट के तरफ अपना अप्रोच ऐसा रखते हैं जिससे आप उस टॉपिक को या कॉन्सेप्ट को समझे, ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कल एक एग्जाम क्रैक करना है, बट इसलिए ताकि आप सच में उसको समझ जाए। When you study with this sincerity and this mentality, you would understand and you would realize कि आप ना चाहते हुए भी बाय डिफॉल्ट हर कॉन्सेप्ट को अपने आप याद कर ले रहे हैं, आपके अंदर वो लिटरली उतर जा रहा है वो कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसा अप्रोच रखते हैं, यू आर नॉट टेकिंग एनी प्रेशर कि मुझे कल एग्जाम में ये लिखना है, मुझे कल एग्जाम में वो लिखना है। यू आर नॉट थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स। व्हाट यू आर डूइंग इज ट्रूली जस्ट सिंपली लविंग द सब्जेक्ट, लविंग द कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इट। एंड जब भी कोई चीजें हम समझ के लर्न करते हैं, वो हम डिफॉल्ट हमेशा याद रख जाते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हमेशा याद रखनी है विद बायोलॉजी। बायोलॉजी भी ऑलमोस्ट 80% कॉन्सेप्चुअल है, बाकी 10-20% जो होता है वो डेफिनेटली कुछ ऐसे टर्म्स है, कुछ नए नाम हैं जो आपको याद करने की जरूरत है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मैक्सिमम टाइम्स आप देखेंगे कि किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। सो व्हेन यू ट्राई टू लर्न दिस वे, व्हेन यू ट्राई टू लर्न with a lot of heart and true sincerity, you would default remember things and biology would no longer be a mug up subject. It is a lot of logics that is existing. ठीक है, तो हम जब इनफैक्ट जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आज अपने सेशन में, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट व्हाट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन, बट ऑल्सो व्हाई द अदर क्वेश्चंस एंड अदर ऑप्शंस फॉर दैट क्वेश्चन आर इनकरेक्ट। क्योंकि सही आंसर जब हम जानते हैं, हम इसलिए जानते हैं आधे से ज्यादा टाइम क्योंकि हमें वो एज अ फैक्ट पता है या फिर हमने वो कॉन्सेप्ट को याद किया है। When you try to have a holistic understanding, when you try to understand the concept repeatedly, जब आप उस चीज को practice करते हैं, you would understand कि why certain options are incorrect, and these are the questions which are make or break kind of situation ये create करते हैं in the final exam। क्यों? क्योंकि जो अगर आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो तो मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जहां पर आपको दो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, it is very difficult for you to discern between them if you have just learned with an approach of mugging up। वो चीजें डिसाइड करने के लिए, वो चीजें मेक और ब्रेक सिचुएशन जो क्रिएट करती है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है आपके लिए सब कॉन्सेप्ट्स को समझना, एंड इसीलिए ये भी डिसाइड करना कि हर क्वेश्चन में कोई सही आंसर क्यों है एंड बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं। ठीक है, चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, ऑलवेज ट्राई टू रीड द होल क्वेश्चन एंड रीड द होल आंसर। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार हमें ऑप्शन ए ही दिख जाता है, पहला ही ऑप्शन दिखता है जो कि सही होगा किसी क्वेश्चन में, लेकिन आपको ये समझना है कि आप उस चीज की गारंटी लेके नहीं चल सकते हैं। यू हैव टू मूव अहेड, रीड ऑल द रिमेनिंग ऑप्शंस एज वेल, एंड देन कम बैक टू ऑप्शन ए, इफ इट इज
the right answer that you had thought of at the first place. So please, even if you're confident, don't try to be overconfident. Don't try to do silly mistakes where you know the concept, but just because of that hastiness, just because of that thinky, oh, I can read this question much faster, I can do this question much faster. Yes, you have to develop a speed pattern also for the final exam, but do not do it at the cost of losing out marks on a particular question. Okay, so coming back to the 12th standard analysis, as I was telling you, कि genetics जो है and reproduction, these are one of the highest weighing units for the 12th standard. And in recent years, ecology also, there are a lot of questions that are being asked upon it because of, obviously, maybe because of practical implication that it has on our environment. And yes, it is very important to learn about ecology. Okay, many children think that ecology is very boring topic, but once again, when you associate it with the practical examples, जब आप उसे actually practical scenario के साथ पढ़ने को try करेंगे, आपको समझ में आएगा कि वो बिल्कुल भी boring नहीं है. In fact, it is one of the most interesting things that you would actually come across. Okay, now coming to 2020 paper analysis, जो हमारा नीट 2020 का पेपर था, अगर आप उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सभी यूनिट्स में से कितने कितने क्वेश्चन आए थे. इफ यू सी हियर, ह्यूमन फिजियोलॉजी में से एक्चुअली काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, नियरली 13 क्वेश्चंस, व्हिच वाज मच मोर देन एक्सपेक्टेड. ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से जो क्वेश्चंस थे, इनफैक्ट जूलॉजी से जो क्वेश्चन थे ना इस बार, वो क्वेश्चंस काफी ज्यादा मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट थे, उनका डिफिकल्टी लेवल कम था, लेकिन हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हुए थे. ठीक है, हर क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हुए थे, मतलब मेजॉरिटी क्वेश्चंस में मल्टीपल क्वेश्चन यूज हुए थे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हुए थे. ऑल्सो अगर आप बॉटनी की बात करें तो बॉटनी के जो क्वेश्चंस थे उनका डिफिकल्टी लेवल स्लाइटली ज्यादा था, बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो बाकी सालों के हिसाब से बायोलॉजी पेपर इस बार थोड़ा सा मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का ही था. इट वाज नॉट अ वेरी टफ पेपर एंड इट वाज वेरी डूएबल. एज आई सेड, इट वाज लाइक मेजरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस. सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर थोड़ा बहुत सिलेबस एनसीईआरटी से बाहर आया था, लेकिन उन क्वेश्चंस में भी आप बाकी चॉइसेस देख करके वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे. ठीक है, समझ में आ गई ये सब बात आपको. अब यहां पर देखेंगे अगर हम लोग, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद जो नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, जैसा मैंने आपको बोला था कि प्लांट फिजियोलॉजी से काफी क्वेश्चन थे, इस बार 10 क्वेश्चन थे. जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. यहां से ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चंस वर देयर. देन टॉकिंग अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन. अच्छा, सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन जो यूनिट है वो एक्चुअली बहुत बड़ा यूनिट नहीं है. मतलब जब आप उसके कंटेंट की बात करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है. इट इज अ लॉट ऑफ लॉजिक्स. इट इज लिटरली द कंटिन्यूएशन ऑफ द सिलेबस दैट यू हैव लर्नड इन योर 9th एंड 10th स्टैंडर्ड. तो इस वजह से इस चैप्टर, इस यूनिट पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हमें आने ही चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आने चाहिए. सो दिस इज अ वेरी डूएबल थिंग. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जब कुछ चीजों को आप जस्ट एक लॉजिक के साथ पढ़ते हैं ना, देन द चांसेस ऑफ यू लूजिंग मार्क्स ऑन दैट बिकम्स ऑलमोस्ट निल. ठीक है, हम ऐसी सिली मिस्टेक्स करते ही नहीं है जब हम इतने कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्चुअली, इतने लॉजिकली पढ़ने को ट्राई करते हैं. देन कमिंग बैक हियर, आपको दिख रहा है कि बायोटेक, बायोटेक तो बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं. यहाँ पे आपका बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है, प्रिंसिपल्स है, एप्लीकेशंस है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से काफी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं यहाँ पे. तो यहाँ से ही ऑलरेडी 9 क्वेश्चंस आए, व्हिच इज लाइक compared to the amount of content that has gone into this unit, 9 question is a good amount of question that have come from here. And ये जो डील है ये एकदम worthwhile डील है, क्योंकि इसमें लिटरली आपको थोड़ा सा पढ़ के, थोड़ा सा समझ के आपको इतने सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाते. ठीक है, दूसरी चीज रिप्रोडक्शन भी देखेंगे तो यहाँ पर 8 क्वेश्चंस आर देयर. दीज क्वेश्चंस वर आल्सो वेरी वेरी डायरेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, राइट. सो दिस इज लाइक एन ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर नीट 2020 पेपर. अब अगर आप इस जोन में आ गए हैं कि किस तरीके से पूरा सिलेबस डिवाइडेड है, किस तरीके से कौन से क्लास में से कौन से क्वेश्चंस, कौन सी यूनिट से कौन से क्वेश्चंस मैक्सिमम आए हैं, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं एंड अपना क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सो लेट अस क्विकली बिगिन. Let us have a look at this question. Presence of which of the following conditions in urine are indicative of diabetes mellitus? Now we know that diabetes is of majorly 2 types: diabetes mellitus, diabetes insipidus. They are called as diabetes, but they are completely different from each other. All right. Now diabetes mellitus, when we see this, mellitus refers to the word sweet.
Okay, now this diabetes mellitus happens because of deficiency of something called as insulin. It is basically a pancreatic hormone, and deficiency of this insulin causes a lot of prolonged amount of sugar to be accumulated in the blood. Okay, this is what causes hyperglycemia. When I say hyperglycemia, what does it mean? It means buildup of sugar or good amount of glucose present in the blood. Okay, excessive amount. When I say good amount, it basically means excessive amount. Okay, going to the other type of diabetes, which is diabetes insipidus. It basically happens because of a specific pituitary hormone, which is called as vasopressin, which you also call as ADH, that is anti-diuretic hormone. Okay, now in this case, diabetes insipidus has nothing to do with sugar metabolism, but very important point here is that it is characterized by excessive thirst and excretion of large amounts of dilute urine. I'm specifying the details of diabetes insipidus also because many children find it confusing to understand the differences between the two. Okay, that is mellitus and insipidus. In fact, to tell you the very basics and the very logical thing about this, that insipidus refers to something which does not have a flavor, something which is tasteless. And in this case, what happens is that the urine, as you're seeing, as I just told you, urine is extremely diluted, and hence, we can say that it doesn't have a taste, it doesn't have a flavor, and hence, this is why we call it as diabetes insipidus. So as I said, something which lacks flavor. Okay, or even taste for that matter. You can write down taste. All right, cool. So going ahead. So basically this is about insipidus. You have understood the difference here. This happens because of lack of water and salt balance in the body. Okay, so keeping it here, let us go back to diabetes mellitus, which is what the question is based on. So this diabetes mellitus, I was telling you all, is caused by the deficiency of pancreatic hormone. अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये इंसुलिन जो pancreatic hormone है, it basically metabolizes glucose, and most important thing, it basically allows the entry of glucose into the cell. Now we all know, ultimately we all need energy for whatever work we are doing, correct? हम जो भी काम कर रहे हैं, हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी हमारे लिए प्राइमरी सोर्स कौन देता है? Primary source of energy for our body, for our cells is what? It is basically glucose, right? It is a carbohydrate. तो इंसुलिन जो है वो बहुत essential होता है कार्बोहाइड्रेट या specifically glucose के uptake के लिए by the cell. When insulin is deficient, what will happen? The cells would no longer be able to take in glucose for the production of energy, right? In fact, for this reason, people who have diabetes mellitus, because of this lack of insulin, what happens is that these people start utilizing, their bodies start utilizing the fats because of literally unavailability of glucose in the cell. क्यों? क्योंकि अगर ग्लूकोज नहीं है, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, what is the next source of energy that our body prefers? ये आप सब बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं. This is basically the next preferred respiratory substrate is basically fats. है ना? तो फैट्स को जब उनका एक बीटा ऑक्सीडेशन नाम का प्रोसेस होता है, जब हम वो करते हैं तो उससे क्या होता है कि कुछ कीटोन बॉडीज बनती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज एसीटोन, देयर इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट. तो ये जो कीटोन बॉडीज हैं ये बॉडी में बिल्डअप होने लगती हैं, इनका प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है. एंड दिस कंडीशन व्हिच बेसिकली हैज रिजल्टेड from diabetes mellitus is termed as ketonuria. That is nothing but the presence of ketone bodies in the urine. The word urea is obviously representing urine. Okay, it is different from urea. Okay, it's basically a waste product. Urea is a different type of waste product which I'll come to later. Okay, so this is one condition that you have understood what has happened because of deficiency of insulin. Also another thing is क्योंकि हमारी बॉडी में इतना ज्यादा शुगर एक्यूमुलेट होने लगता है इफ द इंसुलिन इज लैकिंग, व्हाट विल हैपन इज किडनीज जिनका पर्पस होता है, जिनका काम होता है ब्लड को फिल्टर आउट करना है, जितनी चीजें रीअब्सॉर्ब कर सकते हैं हम रीअब्सॉर्ब करते हैं बिफोर सेंडिंग इट आउट, बिफोर सेंडिंग आउट द वेस्ट थ्रू द यूरिन. व्हाट हैपेंस इज क्योंकि इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है, किडनीज भी अपने रीनल थ्रेशोल्ड पर पहुंच जाती है और उस अमाउंट से ज्यादा, उस स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा किडनीज ग्लूकोज को और अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है. एंड क्योंकि वो ग्लूकोज अब्सॉर्ब नहीं हो पाता है, दिस ग्लूकोज इज सेंट आउट अलॉन्ग विद यूरिन. एंड what will happen? This glucose is being sent out with urine. It means what? This urine would be
sweet in taste, it will have a flavor. And this is exactly what, one of the preliminary test of diabetes is, that a urine test is done where you see the presence of good amount of glucose in case of diabetes mellitus patients. Okay, and this condition where we are seeing the presence of glucose in urine is going to be called as glycosuria. तो जैसा मैंने आपको बोला था, there is logic, there is concept behind every word that you learn, every concept that you learn. Okay, you've understood these two major symptoms. Okay, now let me go back to the question here. Okay, so what you're seeing here is we were asked about the primary indications of diabetes mellitus, है ना? तो यहाँ पर options है आपके पास ketonuria, glycosuria. ये तो answer. Now you have understood why this is going to be the right answer, of course. Then there is renal calculi, hyperglycemia. So in this option, even though hyperglycemia is correct, the other option, which is renal calculi, is incorrect. What is renal? Renal means kidney. What is calculi? Calculi refers to small stones. So basically, renal calculi refers to these small stone-like structures which are formed in kidneys due to, usually most of the times, due to calcium oxalate. ठीक है, तो क्या इसका कोई भी लेना देना है डायबिटीज mellitus या इवन इंसिपिडस से? नो. So this option is incorrect. Talking about uremia and ketonuria, you already know what is ketonuria. Uremia क्या होता है? Uremia is basically the buildup of urea in blood. Okay, तो यूरिया जो है वो एक लिटरली ऑलमोस्ट पॉइजनस सब्सटेंस है हमारी बॉडी के लिए, एंड इट शुड बी एक्सक्रीटेड आउट इन द यूरिन. लेकिन जब हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में यूरिया का अमाउंट बिल्डअप होने लगता है, तो दिस कंडीशन इज व्हाट इज कॉल्ड एज यूरीमिया. डज इट हैव एनीथिंग राइट नाउ टू डू विद डायबिटीज मेलिटस? इज इट इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस? नो. सो कीटोन्यूरिया सही है, लेकिन यूरीमिया गलत है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा पूरा गलत हो गया. एंड टॉकिंग अबाउट द फोर्थ ऑप्शन, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ यूरीमिया एंड रीनल कैल्कुलाई, which are both the incorrect things, hence the option D is going to be incorrect. So you have understood this chapter. This question is based on your chapter chemical control and integration, right? It is like a combination of those hormonal concepts that you have learned along with whatever you have learned in excretion chapter. So the right answer for this question is going to be option A, ketonuria and glycosuria. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. सो दिस इज अ मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन. In fact, you wouldn't, you would believe, of course, because it is there in the paper. But this time we had so many match the following questions in this year's paper. There were almost 16 questions which are match the following pattern. Now, there are obviously pros and cons to this kind of question. होता क्या है कि match the following question में एक चीज जो आसान हो जाती है वो ये होती है कि usually अगर आपको एक या दो options भी आते हैं तो you can have a good guess game kind of thing at this question, क्योंकि यहाँ पर most अगर आपको दो ऑप्शंस भी आते हैं सही तो कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाता है, unless and until examiner has set up a really difficult option for you. ठीक है, तो this is one good thing about it. And the second thing which I was telling about as like the drawback of this question, it is not really a drawback, but the thing is that कि ऐसे questions में usually multiple concepts पूछे जाते हैं. तो obviously ऐसा question आपको आने के लिए, आपको attempt करने के लिए, you really need to know the concepts well. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन को. सो यू हैव इन कॉलम 1 बीन गिवन अबाउट सर्टेन पार्ट्स और सर्टेन पार्ट्स ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स एज सच, एंड दूसरे कॉलम में आपको उसके फंक्शन या सेक्रीशंस के बारे में दिया गया. तो लेट अस स्टार्ट मैचिंग एंड लेट अस ट्राई एंड अटेम्प्ट इट. सो द फर्स्ट थिंग इज प्लेसेंटा. ठीक है, व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा जो होती है वो बेसिकली वो पार्ट होता है जो अलाउ करता है एक फीटस का इम्प्लांटेशन इनटू द यूटरस, इन द यूटरस ऑफ द मदर. ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज अगर प्लेसेंटा नहीं होगा तो अटैचमेंट के लिए अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं बनेगी. And most important, because placenta is responsible for allowing and taking away the nutrition, or rather carrying the nutrition and oxygen from mother's blood to the fetus, to the growing fetus, and take back whatever waste products are there in the fetus body, and whatever amount of carbon dioxide is there, to take it back, to send it back to mother's blood. All this happens with the help of placenta. ठीक है, सारा का सारा कनेक्शन जो होता है एक फीटस का मदर के साथ, वो सब कुछ फीटस के थ्रू, वो सब कुछ प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है. सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि प्लेसेंटा से सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट हार्मोन बनने लगता है वो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, दिस हार्मोन.
ठीक है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है, जो भी मेंस्ट्रुअल चेंजेस हो रहे थे बिफोर द कंसीविंग हैज हैपेंड, उन सब मेंस्ट्रुअल चेंजेस को वो रोकता है एंड इट अलाउज द कॉर्पस ल्यूटियम टू सेक्रेट गुड अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन स्पेशली इन द फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी। एंड अगर ये एचसीजी सेक्रेट नहीं होता तो फीटस का स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, लेट मी शो यू एन इमेज ऑफ द प्लेसेंटा हियर। यस, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। डायग्राम में भी आपके लिए लेबल्ड है ही ये चीज। तो यूट्रस में वो अटैचमेंट पॉइंट जो होता है उसे हम बुलाते हैं प्लेसेंटा, एंड वन ऑफ द फर्स्ट हार्मोन्स टू बी सेक्रेटेड आउट एंड वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन टू बी सेक्रेटेड आउट फ्रॉम प्लेसेंटा इज एचसीजी। इन फैक्ट लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट दिस। ये जो एचसीजी हार्मोन है, इसी का अमाउंट जो होता है डिटर्मिन किया जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। जो भी प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट्स भी आते हैं उनमें भी जो एक्चुअली हार्मोन आइडेंटिफाई होता है in the urine of a mother who must have conceived right now or recently, वो basically HCG हार्मोन का ही डिटेक्शन होता है। So rapid pregnancy test kits, ये सब चीजें बेस्ड होती है हमारे इस HCG हार्मोन पे। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन जो आपको दिया गया था वो था जोना पेलुसिडा का। ठीक है, अब इसका लॉजिक समझते हैं। जोना रेफर्स टू बेसिकली जोन एंड पेलुसिडा जो होता है इट रेफर्स टू अ ट्रांसपेरेंट लेयर। ओके, सो व्हाट इज जोना पेलुसिडा? एक oocyte जो होती है उसके सराउंडिंग में जो एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है ग्लाइकोप्रोटीन का, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब भी स्पर्म आएगा टू अटैच टू दिस ओवम बेसिकली एग, राइट, व्हाट विल हैपन, उसके जो जोना पेलुसिडा पे अटैच होने के, इस ग्लाइकोप्रोटीन पे अटैच होने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्पर्म के पास होते हैं, एंड दिस इज व्हाट अलाउज द फर्टिलाइजेशन टू अकर। ओके, दिस अटैचमेंट इज व्हाट अलाउज द फर्दर फर्टिलाइजेशन टू अकर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दिया हुआ था। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होते हैं इट इज बेसिकली लोकेटेड पोस्टीरोलेटरली टू द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ऑफ अ मेल्स पीनस। ओके, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम काउपर्स ग्लैंड भी बुलाते हैं। मैं यहां लिख देती हूं। ऑलराइट, what is the function of this gland? They basically add volume to the semen of males, right? That is the secretion of penis. Now what happens is that during sexual intercourse it is very important for the lubricant to be secreted, and this lubrication to the penis is basically provided by the secretions of the bulbourethral gland या फिर Cowper's gland। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर था आपके पास आपके लेडिक सेल्स, राइट। लेडिक सेल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में व्हिच इज देयर राइट एडजेसेंट टू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, राइट। तो इनको इसीलिए हम बुलाते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक आल्सो, राइट। इनका क्या काम होता है? ये बेसिकली मेल हार्मोन को सेक्रेट करते हैं जिन्हें हम इन जनरल बुलाते हैं एंड्रोजेंस, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड्रोजेंस इज व्हाट? इट इज टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो याद आया। अब हम इस क्वेश्चन को पूरा मैच करने को ट्राई करते हैं। सो प्लेसेंटा चला जाएगा ऑप्शन 2 के पास व्हिच इज HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। जोना पेलुसिडा इज बेसिकली अ लेयर ऑफ ओवम, that is the option B is going to match to 3. Then comes bulbourethral gland. It allows basically secretion of mucus which allows the lubrication of penis, and then comes Leydig cells which basically go on to secretion of androgens। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। Let us look at this question. This is again a match the following type of question. तो यहाँ पर आपके पास है कॉलम 1 और कॉलम 2, एंड कॉलम 1 में कुछ चीजें दी गई हैं जिनको उनके फंक्शन के साथ या उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैच करना है इन द कॉलम 2। ओके, सबसे पहली चीज से स्टार्ट करते हैं। वी हैव बीटी कॉटन। ओके, तो बीटी कॉटन क्या होता है? बीटी कॉटन इज बेसिकली अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, हम इसको जीएमओ भी बुला सकते हैं। सो दिस इज अ जीएमओ, दिस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इट इज बेसिकली अ कॉटन प्लांट or tree which has been given a special gene which we have derived from a bacteria जिसका नाम होता है Bacillus thuringiensis। ठीक है, अब क्यों हमने यहां से लिया है और ये क्यों जरूरी है? तो कॉटन प्लांट जो होता है इट इज वेरी ससेप्टेबल टू बेसिकली दीस सेट ऑफ लार्वे एंड वर्म्स व्हिच आर कॉल्ड एज बॉल वर्म्स। ठीक है, तो इससे जब इन्फेक्ट होता है तो ऑब्वियसली पूरी की पूरी कॉटन प्लांट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसकी वजह से दिस काइंड ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और दिस काइंड ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन प्लांट व्हिच इज कॉल्ड एज बीटी कॉटन वाज प्रोड्यूस्ड। यहां क्या किया गया? बैसिलस थुरिंजिएंसिस नाम के जो बैक्टीरिया से क्राई नाम का एक जीन होता है,
right? So this is cry gene, which basically synthesizes a toxin, a crystalline toxin, which is called as cry toxin. ठीक है, ये बेसिकली कुछ प्रोटीनेशियस टॉक्सिन पार्टिकल्स होते हैं या क्रिस्टल्स होते हैं, जो कि अगर हम यहाँ पर कॉटन प्लांट में डाल रहे हैं इसको कोड करने वाला जीन, तो होता क्या है, अगर वो बॉलवर्म आकर के कॉटन प्लांट को खाएगा तो उससे क्या होगा, ये जो जीन है, इसका जो प्रोडक्ट है, ये बॉलवर्म जो है वो इंजेस्ट कर लेगा। और होता क्या है कि इन बॉलवर्म के इंटेस्टाइन में, उनके गट में पीएच काफी हाई होता है, पीएच काफी हद तक अल्कलाइन जो होता है, उस अल्कलाइन पीएच के प्रेजेंस में ये जो टॉक्सिन है ये एक्टिवेट हो जाती है। और जैसे ही ये टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाती है, इट starts forming pores and perforation, which causes leaking of all the content in the gut of the insect, and that is why killing the bollworm. तो समझे क्या हुआ यहाँ पर, हमने अपने कॉटन प्लांट को, कॉटन क्रॉप को प्रोटेक्ट किया है from these particular insects called as the bollworms, right? So this is what is BT cotton about, right? आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको दिया गया था एडीए के बारे में, राइट? एडीए क्या होता है? एडीए स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक है? इसकी अगर डेफिशिएंसी अगर हो जाती है, ये जो एंजाइम है, दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, दिस बेसिकली लीड्स टू अ कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड एज स्किड. व्हाट इज इट कॉल्ड एज? It's called as SCID, which stands for severe combined immunodeficiency. And as the name itself is suggesting, what is severe combined immunodeficiency? It is basically a lot of deficiency of the immune system, so much so that the person is not able to fight any kind of infection, be it bacterial, be it viral, be it fungal. ये सब से किसी भी ऑर्गेनिज्म से, किसी भी पैथोजन से हमारी बॉडी फाइट ही नहीं कर पाती अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है तो. What does this enzyme do? Just to give you some basic information, this enzyme, ADA enzyme, basically converts something called as deoxyadenosine to deoxyinosin, right? और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो डीऑक्सीएडिनोसिन है वो हमारी जो लिम्फोसाइट्स होती है, which is a type of white blood cell, उसके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, एंड इसीलिए इट कन्वर्ट्स इट इनटू अ नॉन हार्मफुल फॉर्म which is called as deoxyinosin. तो जस्ट इमेजिन करिए, अगर एडीए की डेफिशिएंसी है तो ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा. इस वजह से जो लिम्फोसाइट्स होंगी वो बेयरली नेमसेक बनेंगी या फिर नहीं बनेंगी और उनकी हेल्थ बिल्कुल सही नहीं होगी, एंड दैट इज व्हाई द इम्यून सिस्टम इज गोइंग टू बी लाइक कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड. ओके, तो समझ में आ गया आपको एडीए के बारे में. डेफिशिएंसी ऑफ एडीए बेसिकली कॉजेस स्किड. ओके, आगे चलते हैं. देयर वाज अ डिस्क्रिप्शन और बेसिकली अ पॉइंट व्हिच वाज अबाउट आरएनए इंटरफेरेंस, राइट? आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? इट इज बेसिकली अ मैकेनिज्म ऑफ सेल्युलर डिफेंस इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल एज अ स्पेशल पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेस. यहां पर क्या होता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो आरएनए होता है, यहां पर छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स ऑफ आरएनए बनते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं एसआईआरएनए और स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए. ठीक है, ये बेसिकली कुछ एंजाइम्स के साथ मिलके एक आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स और रिस्क कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कुछ इस तरीके से. ये आपको दिखा, siRNA which is bound to risk, which is RNA induced silencing complex. और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो भी फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में वायरल पैथोजन है, कोई इन्फेक्ट कर रहा है, तो अगर वो हमारे होस्ट के डीएनए को लेकर के अपना जीनोम एक्सप्रेस कर रहा है, उसमें जाकर के उस एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री पीसेस बना के लिटरली कॉम्प्लीमेंट्री पोजीशंस पे वो बाइंड कर जाता है. और इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि एमआरएनए बाय प्रॉपर्टी एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, तो जैसे ही इस तरीके की कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होती है, द होल एमआरएनए ऑफ or rather the whole gene expression of the particular pathogen is going to be completely disrupted. समझे आप ये बात? तो ये जो है एक मैकेनिज्म है जिसे हम बुलाते हैं सेल्युलर डिफेंस मैकेनिज्म, राइट? इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ वायरल पैथोजेंस एटसेट्रा. इट्स अ वेरी हाईली इवॉल्व्ड काइंड ऑफ मैकेनिज्म. ओके, आगे चलते हैं. देयर वाज अनदर ऑप्शन व्हिच वाज गिवन एज पीसीआर. पीसीआर क्या होता है? पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए को पॉलीमराइज करता है. हम लोग इस प्रोसेस को मॉडिफाई करके कभी कभी आरएनए को भी हम लोग एम्पलीफाई कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स आरएनए से पहले डीएनए बनाया जाता है और फिर उसे एम्पलीफाई किया जाता है. ओके, तो ये जो पॉलीमरेज है, फिर आता है चेन रिएक्शन. चेन रिएक्शन में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक साइकिल होते हैं जो कंटिन्यूअसली हम उसको रन करते हैं, ताकि द अमाउंट ऑफ sample that you have, the amount of DNA that you have in your sample
amplifies drastically. So this is basically an amplification cycle. Okay, तो इसे हम बुलाते हैं polymerase chain reaction. यहाँ पर जो चीजें होती हैं वो बेसिकली स्टेजेस होते हैं. वो क्या क्या होते हैं? डीनेचरेशन का स्टेज, जहां पर आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डीनेचर होगा, हम उनको सेपरेट करेंगे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ले जाके. फिर उसके बाद हम उसमें अनीलिंग कराते हैं, जहां पर कि प्राइमर जो होता है, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक प्राइमर बहुत जरूरी है. डीएनए पॉलीमरेज कैन ओनली कंटिन्यू रेप्लिकेशन, इट कैन नॉट इनिशिएट इट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ प्राइमर इज गोइंग टू बी एडेड in this whole reaction that we are conducting in the PCR machine. And वहां पर basically polymerase using that primer is going to continue the replication, and from this whole replication cycle which is continued is what is called as elongation. Once this happen, वापस से जो डीएनए बने हैं अब हम उन्हें वापस से सेपरेट करेंगे, वापस से अनीलिंग करेंगे प्राइमर के और वापस से इलोंगेट करेंगे. तो ये जो साइकिल है दिस बेसिकली कीप्स रिपीटिंग. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन डायग्नोस्टिक साइंस एंड डायग्नोस्टिक मेडिकल साइंस. व्हाई? बिकॉज जब भी वायरसेस इनफैक्ट किसी भी चीज को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं, वी ऑल नो दैट वायरसेस आर रियली स्मॉल इन साइज. तो उनका जो जीनोम है, अगर मुझे हमारी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करना है किस सेल में पता नहीं कितना जीनोम है, उन सब चीजों की एम्प्लीफिकेशन के लिए एंड हेंस आइडेंटिफिकेशन के लिए दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेक्निक. सो दिस अलाउज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर डिफिकल्ट टू कल्चर बाय डिटेक्टिंग देयर डीएनए और देयर आरएनए, व्हाटएवर इज देयर जेनेटिक मटेरियल. राइट? तो अब आप क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग था, हम इसे फिर से मैच करने को ट्राई करते हैं. सो बीटी कॉटन कहां चला जाएगा? सीधा बैसिलस thuringiensis के पास. फिर आता है हमारा एडीएम, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी. क्योंकि मैंने आपको बताया था ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. इसको अगर हम ट्रीट करना चाहें तो हम बेसिकली इसको जीन थेरेपी से ट्रीट करते हैं. In fact, one of the first gene therapies that was done, it was done in order to treat ADA deficiency in a 4-year-old girl in the year 1990. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. ये जो पूरी डिटेल्स मैंने दी है ये आपको याद रखनी है. ठीक है, आगे चलते हैं. आरएनए इंटरफेरेंस, एज आई सेड, इट इज बेसिकली अ मैकेनिज्म ऑफ सेल्युलर डिफेंस, and PCR is going to be used for detection of infections like viral infection like HIV infection. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन अ वेक्टर इज टर्म्ड एज व्हाट. ठीक है, तो पहली चीज तो कॉपी नंबर क्या होती है? कॉपी नंबर होता है जितने नंबर ऑफ कॉपीज में आपका डीएनए प्रोड्यूस होने वाला है आफ्टर द रेप्लिकेशन हैज हैपेंड. ठीक है, अब यहाँ पर हम ये कंडीशन दे रहे हैं एक वेक्टर में जो हमें पता है इज बेसिकली अ मीडियम इन ऑर्डर टू ट्रांसफर अ जीन फ्रॉम वन सोर्स टू द अदर. ओके, हम बेसिकली एक ट्रांसजीन जो होता है उसको कैरी करवाते हैं इन द वेक्टर इनटू द रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म, जिसे हम ऑब्वियसली जब उसका रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा डीएनए का उसके बाद हम उसे रिकॉम्बिनेंट बुलाते हैं. ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्या क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, रिकॉग्निशन साइट, सिलेक्टेबल मार्कर या फिर ओराई साइट. ठीक है, अब एक बेसिक एसेंशियलिटी जो आप सब जानते हैं, in order to allow replication to happen, in order to have a specific copies of replication, right, copies of the molecule that is being formed after replication, what is that essential thing? The most essential thing is to have an origin of replication, which is what is called as orai site, right, which is what is called as orai site. अब orai site जो होती है वो प्रोकैरियोट्स में भी होती हैं एंड यूकैरियोट्स में भी होते हैं. कुछ इस तरीके के होते हैं हमारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. याद आया आपको ये कॉन्सेप्ट? तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर नहीं है तो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो ही नहीं सकता. रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा नहीं तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ कॉपी नंबर कैसे मेंटेन होंगे? ठीक है, तो क्योंकि स्पेशली इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स देयर आर मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस इन ऑर्डर टू अलाउ the replication to happen at a specific speed, right? क्यों? क्योंकि यूकैरियोट्स का जीनोम इतना बड़ा होता है कि अगर सिर्फ एक ही एंजाइम एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ काम करेगा तो भगवान जाने कब जाकर के वो रेप्लिकेशन साइकिल खत्म होगी, राइट? सो इन ऑर्डर टू अलाउ दैट टू हैपन प्रॉपर्ली देयर आर मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स. सो दिस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कॉपी नंबर. बाकी जो इनकरेक्ट ऑप्शन थे, दैट इज योर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, रिकॉग्निशन साइट, सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं मैं आपको ये भी एक बार याद दिला देती हूँ. सबसे पहली चीज तो रिकॉग्निशन साइट की बात करूंगी. व्हाट इज रिकॉग्निशन साइट? रिकॉग्निशन साइट ऐसे स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जहां पे बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स होते हैं वो कट करते हैं एंड एक हम स्पेसिफिक अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को उठा सकते हैं या निकाल सकते हैं एंड फाइनली उसको वी कैन ट्रांसफर इट इनटू द रेसिपिएंट सेल और द रेसिपिएंट जीनोम.
Okay, that is what is called as recognition site. And usually इस तरीके की recognition site में there are something called as palindromes or palindromic sequences. What is palindrome? सबसे simple language में सबसे पहले आपने ये सब सुना होगा, Malayalam, right? What is this? This word is a palindrome. Whether you read it from left to right or you read it from right to left, the spelling is the same. It is spelled the same way. In a similar way, sometimes what happens is कि genetic sequences में आपके पास कुछ ऐसे sequences होते हैं जिनको जब हम read करते हैं तो 5 to 3 या 3 to 5 आप read करें. एक्चुअली रीडिंग सीक्वेंस जो होता है वो हमेशा 5 to 3 ही होता है, बट ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ. तो जब आप ऐसे रीड करते हैं इट इज गोइंग टू रीड द सेम थिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट इट डाउन हियर. जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 प्राइम GAA ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है. इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा? लेट अस मेक इट. C के पास G, सामने G के सामने A, सॉरी T के सामने A, T के सामने A के सामने T, A के सामने T एंड G के सामने C, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी योर 3 प्राइम एंड. तो GAATTC अगर आप पहले स्ट्रैंड में देखेंगे, दिस स्ट्रैंड फर्स्ट स्ट्रैंड, इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में क्या प्रेजेंट है? रीड इट फ्रॉम 5 to 3 अगेन, GAATTC. समझे? दिस इज व्हाट इज पैलेंड्रोम, स्पेशली इन केस ऑफ योर जेनेटिक मटेरियल DNA. ओके, इट्स अ डबल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस हियर. टॉकिंग अबाउट सेलेक्टेबल मार्कर. अच्छा, सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं? दे आर बेसिकली स्पेसिफिक सीक्वेंसेस which code for a specific protein which allows the selection of the transformant or the transgenic thing that we have made from the whole set of recombinants or even the original population. तो यहाँ क्या होता है? Like for example, you can think of antibiotic resistance gene as a selectable marker. Okay, antibiotic resistance genes का जो कोडिंग है यहाँ पर क्या होगा? वो जीन जो होता है, अगर मैं स्पेशली अगर मैं इस सेल को जिसमें ये जीन आया है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आया है, अगर मैं इस सेल को एक एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करती हूं तो ये सेल आराम से ग्रो कर पाएगी और एंटीबायोटिक की वजह से मरेगी नहीं. क्यों? बिकॉज इट हैज दिस स्पेशल gene which is acting like a selectable marker and it will allow the cell to grow even in the presence of this antibiotic. So this is one of the best example of it. Similarly ऐसे lactose utilization वगैरह के भी specific selectable markers होते हैं. So going back to the question, सारे terms हमने discuss कर लिए हैं. क्यों कोई गलत आंसर था? पहली चीज तो आपको सही आंसर इस क्वेश्चन का वैसे ही समझ में आ गया. The sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector is termed as ovary site. चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को. This is a match the following type of question where you have two columns, column 1, column 2, जिसमें descriptions दिए गए हैं. पहले कॉलम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है एनिमल किंगडम से रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के बारे में. आपको इन दोनों कॉलम्स को मैच करना है. ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसिकली इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको पहले तो याद दिला देती हूँ. 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स हैं, वहां से स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहली चीज तो जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर बेसिकली अ टाइप ऑफ anatha, right? Anatha basically means without. A means without here. Natha refers to jaw. ठीक है, so these are basically jawless organisms. One of the best examples is इनके जो petromyzon is one example which is a lamprey. फिर hagfishes होती हैं. इनमें जो होते हैं 6 से 15 के आसपास के gill slits होते हैं. They have a very elongated body, right? And that is why the gill slit number is also quite high this way, right? तो cyclostomes के लिए हो गया. आगे चलते हैं chondrichthyes. Chondrichthyes are basically the cartilaginous fishes. एंड इनकी एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इनका जो टेल फिन होता है, फॉर एग्जाम्पल जिसे हम लोग कॉर्डल फिन भी बुलाते हैं, ये जो होता है वो हेटेरोसर्कल होता है. इसका मतलब है ये अनइक्वल लोब्स होते हैं इसमें. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बनाया, एक ये बड़ा लोब है और एक ये छोटा लोब है. तो इस तरीके से हेटेरोसर्कल कॉर्डल फिन इज व्हाट इज सीन इन कार्टिलेजिनस फिशेस. That is chondrichthyes, class chondrichthyes. Then we go on to class osteichthyes. Class osteichthyes basically refers to the bony fishes. Osti word or osteic word is coming from the word bones and ichthyes refers to fishes. So ये जो bony fishes होती हैं इनमें something called as air bladder or swim bladder is there which is exactly what this looks like. ये क्यों जरूरी है? This basically allows these fishes to kind of float at a specific and swim at a specific depth
without technically floating on the top surface of the water or even sinking at the bottom. तो ये दोनों चीजें ये अवॉइड करवाता है एंड फिशेस को जहां पर भी रहने की जरूरत है वहां पर उनको स्विम करने के लिए अलाउ करता है. क्यों? बिकॉज दिस स्विम ब्लैडर मेंटेन्स बायोएंसी. हाउ? दिस बेसिकली स्टोर्स गैस, स्पेसिफिकली ऑक्सीजन. ठीक है, स्पेशली ऑक्सीजन को स्टोर करता है स्विम ब्लैडर. समझ में आई आपको ये बात? और फिर एक और क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग में जो आपको एक ऑप्शन दिया गया था वो था ट्राइगॉन का. ट्राइगॉन क्या है? इट्स बेसिकली द स्टिंगरे, है ना. It's basically the stingray. Basically, it possesses these stings which kind of can stun an animal, right? It's very very poisonous sting. So this is what is about the trigon. इसको हम stingray भी बोलते हैं. तो अब हम लोग अपने ऑप्शंस को मैच करने को ट्राई करते हैं. तो 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स जो है वो किस में जाएगा? साइक्लोस्टोम्स, राइट. फिर आता है हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन. ये कहां पर था? ये बेसिकली कॉन्ड्रिक्थायस, दैट इज कार्टिलेजिनस फिशेस की एक प्रॉपर्टी है. फिर आता है एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर, जैसा मैं आपको बता रही थी. ये होता है बोनी फिशेस में. इट अलाउज देम टू फ्लोट एट और स्विम एट अ स्पेसिफिक लेवल इन सी. एंड देन टॉकिंग अबाउट पॉइजनस स्टिंग which is what is present in trigon. So the right answer is going to be A2, B3, C4 and D1, which is what is your option number C. Let us have a look at this question. In which of the following techniques the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive? ठीक है, तो now the interesting thing about this question and the tricky thing about this question is that you need to notice this embryos. Okay, now in order to treat the females who cannot conceive, there are going to be gametic transfer methods also, but here the question is majorly asking you about the embryo transfer technique, right? So the answer for this question is going to be ZIFT and the IUT. Okay, I'll still help you all revise all the concepts that are given in this question and are associated with this. So first let me start with ZIFT or ZIFT. Okay, ZIFT or ZIFT stands for zygote intrafallopian transfer. ZIFT. Okay, here what happens is, as the name is suggesting, zygote, right? You're going to take the zygote and transfer it inside the fallopian tube. So that makes it zygote intrafallopian transfer. Now, why is this done? This is done in order to allow the fertilization to happen in an in vitro way, right? When I say in vitro, it basically refers to, let me write it down so that I can explain you this part. In vitro means, vitro refers to basically glass, right? So whenever something is done artificially inside a test tube or in a petri dish, basically outside the body, we usually refer to those laboratory based techniques as in vitro techniques. Okay. So here my point is that you are going to take the in vitro fertilized zygote and put it or implant it in the fallopian tube of the female. Now here the most important point is that in this case, what you are going to use, the embryo that you are going to use is going to be up till an 8 blastomere stage. Okay, this is a very very important point. So the embryo is going to be of up to 8 blastomere stage, and this is what is going to be transferred inside the fallopian tube of the female who has not been able to conceive, right? Going ahead with the next technology that you can use to treat this kind of a problem is intrauterine transfer or IUT. Okay, when I say intrauterine, what does it mean? Here the transfer is going to happen in the uterus. Okay, and you know that when you talk about natural pregnancy or natural progression and development of the fetus, that usually happens at a stage where there are more than 8 blastomeres. So the same concept is actually used in this artificial process also. What happens here is that the zygote, or rather I should say actually the embryo that is used for transferring and implantation into the uterus of the females, here is going to be more than 8 blastomere stage. Okay, more than 8 blastomere stage. So this is the exact difference that is existing between the ZIFT technique and the IUT technique. Now this is the answer to the given question, right? Now the ZIFT technique is basically having the embryo implantation with respect to lesser than 8 blastomere into the fallopian tube. Here it is going to be the implantation within the uterus at a stage which is more than 8 blastomere stage. Okay, so this is clear with you, right? Next we go on to the other techniques which are given there in the question. The other is ICSI or ICSI. When I say ICSI, basically it stands for intra
cytoplasmic sperm injection. Break it down and learn it this way. This is the most simplest way to deal with it. It won't be sounding like these, fancy and tough kind of terms, right? So ICSI, when I say, it basically stands for intracytoplasmic. That means what? Cytoplasm ke andar sperm ka injection, right? What are we doing here? We are directly injecting the sperm into the, or rather the sperm nucleus into the cytoplasm of the egg, right? You're getting my point? So here what you're doing is sperm injection with the help of this micro pipette, right? This is all done under microscope, under very guided techniques, and here the sperm nucleus is going to be injected inside the egg. All right, you got this point? So this is called as ICSI. Now, obviously, there was no implantation of embryo right now here, which is what was asked in the question. Okay, next is you also had GIFT or GIFT, which basically stands for gamete intrafallopian transfer. Now, this technique is basically very, very close to the natural method of conception. Here, what you're going to do is you're going to use gametes. This is the point of difference between GIFT and ZIFT. Okay, so here you are going to use gametes, and what is done is that egg and sperms, that is the gametes, are going to be placed in the oviduct so that the fertilization can happen naturally within the female reproductive tract. And that is why here there is no transfer of embryos that are done here. So what will be the right answer for this question? As I had specified, ZIFT and IUT. And why not the rest of the options? You know that very well now. Let us have a look at this question. Select the correct events that occur during inspiration. Okay, what is inspiration? Basically taking in of air, which is going to be rich in oxygen. Okay, so here the options are contraction of diaphragm, contraction of external intercostal muscles, pulmonary volume decreases, or the intrapulmonary pressure increases. Okay, now this is very, very simple. Just think of it this way. What happens is that when you are going to start your inspiration process, the diaphragm, which is the dome-shaped muscle, right, that diaphragm starts contracting and hence it starts becoming flattened. Okay, it starts contracting. For that reason, it starts becoming flattened. So what has happened? It has created a little more space in the lungs or the thoracic cavity here. Correct? Now, this we are saying basically because of this contraction of the dome-shaped muscles of the diaphragm, what happens is that the thoracic cavity basically increases its space in the antero-posterior axis. Okay, just think of it. Whenever you look at a tubular structure as such, the top part of it or the opening part of it or the mouth part of it is usually going to be referred as anterior part, and the posterior is obviously going to be the opposite part of it. So the similar way, just think of your body. So for this thoracic cavity, basically what will happen, as soon as the dome-shaped muscles contract, basically it becomes flattened. What will happen? The thoracic cavity is going to increase its space and the volume in an antero-posterior axis. At the same time, what happens is that the external intercostal muscles, right? External intercostal muscles basically contract, and when they are contracting and being pulled outward, what is going to happen? The rib cage kind of moves a little bit outward, and even the breastbone moves a little bit outward. So when this is happening, what is happening? The volume of the thoracic cage is further increasing at the dorsoventral axis. Okay, so what has happened? Overall, in the anterior posterior axis as well as dorsoventral axis, the cavity or the space inside the cavity and the volume of this whole cavity is increasing, and this causes the pressure inside the thoracic cavity to reduce. You know this process of this principle of physics, right? So if you are basically keeping the similar volume in a larger space, what will happen to that gas? The pressure of that gas is obviously going to decrease because the molecules are going to move far apart. And that is why I keep saying that everything has a basic concept, whether it is biology, whether it is chemistry, whether it is physics, it's all basic science, right? So these molecules are going to move far apart and hence creating a good amount of space and reducing the pressure, creating a kind of a vacuum, not a true vacuum, but a kind of a vacuum within the thoracic cavity, because of which the air will gush in. Right? So what is happening here? The pressure inside the thoracic cavity while inspiration is actually decreasing, volume is increasing, external intercostal muscles are contracting,
and the dome shaped muscle or the dome shaped diaphragm basically is going to contract and flatten out. Okay, now let us try to choose the options here. So contraction of diaphragm is happening, yes. Contraction of external intercostal muscles is happening, yes. Pulmonary volume is decreasing, no, this is exactly opposite. And intrapulmonary pressure increases, no, the intrapulmonary or the pressure within the pulmonary part, that is basically we are referring to the thoracic cavity, is actually, that pressure is actually decreasing. So these two options are incorrect and the first two options are correct, which means A and B are going to be correct. Let me show you a beautiful image here which is representing all the things that I just explained. So you see how this lovely dome shaped diaphragm is kind of contracting, it is flattening out. So it is so logical that brings literally smile to my face. It's just so conceptual, right? We keep learning about these pressure of gases in physics and learn all these graphs, etc. So how do you really apply that to biology? And this is how you apply it. It's very simple, very plain, very basic science. Okay, so this is how you're seeing. And in inspiration, you're seeing that the external intercostal muscles are going to contract as such, and this is going to literally expand the whole chest and allow the air to gush in. At the same time, expiration is going to have exactly opposite changes here. Okay, so the right answer for this question is going to be option C. That is, both A and B statements are correct. Let us have a look at this question. The QRS complex in a standard ECG represents which of the following? So what is ECG? ECG basically stands for electrocardiogram. And what is it measured with? It is measured with an instrument which is called as electrocardiograph. Okay, ECG is also called as EKG. All right, so it's the same thing if at all you get this in question ever. Okay, so now when we talk about QRS complex, let us first go back a little bit and understand what is this that we are trying to do. ECG basically measures all the electrical activities that are happening in the heart, okay, especially the walls of the heart when we talk about it. So what happens is that these impulses are transmitted from one point to another to another to another, bringing about contraction and relaxation of the specific part where this is happening. Okay, so basically you know that the impulse basically generates at SA node, we call it as SAN, and then it is transferred to AV node through the walls and then into the ventricles, etc. Okay, so here when you actually measure or see or read the ECG, what happens is that you see typically 5 waves. Okay, let me show you that. Here what you see is typically 5 waves. There is wave P, there is wave Q, wave R, wave S, and then there is a lovely curvy wave which is called as wave T. Let us take them one by one. So first thing is we are talking about the P wave first. What is P wave? P wave basically represents the depolarization activity of the atria which initiates the atrial contraction. Okay, now this is the start of the whole of the impulse conduction, and this is where atrial contraction happens due to atrial depolarization. The second wave, which is like a large peak, is what is represented by QRS wave. And when QRS wave is actually happening, what happens is that there is depolarization of the ventricles. Okay, there is depolarization of the ventricles which brings about ventricular systole or ventricular contraction. Okay, so this is what exactly the question was asking. So this depolarization of ventricles is what is causing the ventricles to contract or the ventricles to undergo systole. Okay, going further, talking about the T wave, basically it's, I said now, it's a curvy dome shaped kind of a wave which basically brings back everything to normal, which means it is going to allow the repolarization of the ventricles, bringing about the ventricular relaxation. Okay, you all got this point. So what is going to be the right answer for this question? QRS complex in a standard ECG is going to represent what? Depolarization of ventricles. Let us have a look at this question. The enzyme enterokinase helps in conversion of. तो enterokinase जो एंजाइम है वो किस चीज में कन्वर्ट करता है? पहली चीज याद करिए कि एंटेरोकाइनेज क्या होता है. एंटेरोकाइनेज बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि सेक्रीट होता है सक्कस एंटेरिकस में, राइट? What is succus entericus? It is the intestinal juice, है ना? तो अब ये जो एंजाइम सेक्रीट होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि इसी एंजाइम की वजह से
very important enzyme which is a pancreatic enzyme trypsinogen gets converted into trypsin और इसकी वजह से बाकी सारे एक्टिवेशन होते हैं बाकी सभी मोस्ट ऑफ द पैंक्रियाटिक एंजाइम के जो कि एक्चुअली जाइमोजेनिक फॉर्म में सेक्रीट हुए थे। जाइमोजन क्या होता है? इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एन एंजाइम। ओके, तो जैसा मैं नाम बोल रही हूँ ट्रिप्सिनोजन ये भी एक इनएक्टिव एंजाइम है। ये जब एक्टिवेट होता है बिकॉज ऑफ द एंटेरोकाइनेज दिस इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन फाइनली अपना प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो चीजें दी हैं एक बार मैं उसको आपको इसके सॉल्यूशंस याद दिलाती हूँ। यहाँ पर आपने देखा जैसा मैंने आपको बोला कि एंटेरोकाइनेज क्या करने वाला है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। जो पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन दिया गया है इन वन ऑफ द ऑप्शन दैट बेसिकली हैपेंस इन द स्टमक। पेप्सिनोजन इज एक्चुअली अ गैस्ट्रिक एंजाइम, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सेक्रीट होता है। स्टमक में जो हमारी चीफ सेल्स होती हैं वो सेक्रीट करती हैं हमारे पेप्सिनोजन को विच इज अनदर जाइमोजन। और ये जो पेप्सिनोजन है ये पेप्सिनोजन एक्टिवेट हो जाता है इनटू पेप्सिन। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? HCl के प्रेजेंस में। HCl किसने सेक्रीट किया है? HCl सेक्रीट किया है ऑक्जेंटिक सेल्स ने। ठीक है, स्टमक में ही हो रहा है ये सब काम। आगे चलते हैं केसिनोजन। केसिनोजन जो होता है ये बेसिकली कन्वर्ट होता है इनटू केसिन एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये होता है सिर्फ ह्यूमन इन्फेंट्स में। ओके, ये जो है सिर्फ ह्यूमन इन्फेंट्स मैंने बोला, लेकिन जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस के सिर्फ इन्फेंट्स में होता है, ये बहुत सारे कट च्यूइंग एनिमल्स में भी होता है। तो ये जो रेनिन है ये बेसिकली मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है जो सिर्फ इन्फेंट स्टेज पे सेक्रीट होता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो इन्फेंट्स होते हैं जो फीड करते हैं, जब वो दूध पीते हैं उसके बाद उनके मुंह से लिटरली ऐसे फटा हुआ दूध या दही जैसा कुछ चीज है जो बाहर निकलता है, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एंजाइम। ठीक है, दैट कर्डलिंग ऑफ मिल्क हैपेंस बिकॉज ऑफ रेनिन। सो दिस इज द रेनिन which is converting caseinogen into casein and then फिर आता है आपका proteins into polypeptides। ये तो बहुत सारे proteases हैं जो हमारे पूरे most of the work is being done in the small intestine। ठीक है, तो ये जो enzymes की कैटेगरी होती है इन्हें हम बुलाते हैं protease। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? The enzyme enterokinase helps in the conversion of trypsinogen into trypsin। Let us have a look at this question। Identify the correct statement with reference to human digestive system। ठीक है, तो human digestive system के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे statements दिए गए हैं, आपको choose करना है correct statement। Now in such kind of questions what happens is that children tend to overlook whether it's being asked about the correct statement or the incorrect statement or the wrong statement, and then just because of this kind of a little bit amount of overconfidence and lack of concentration students tend to lose out on the marks that they were easily capable of getting, है ना। तो ये क्वेश्चन भी वन ऑफ दोज क्वेश्चंस का हमारा एग्जांपल है। तो पहले बात करते हैं, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट देखा जा रहा है। ऑप्शंस है आपके पास, इलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट, तो ये ऑब्वियसली एक करेक्ट स्टेटमेंट है। इलियम क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम सबसे लंबा पार्ट है, बहुत अच्छे से कॉइल्ड पार्ट है, ऑलमोस्ट 3.5 मीटर लॉन्ग होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम। ओके, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम डिओडेनम। नहीं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स तो सीकम से अराइज होता है विच इज अ पार्ट ऑफ the large intestine. In fact, it is the starting part of the large intestine where ileum is technically opening into cecum। फिर आते हैं तीसरे स्टेटमेंट पे, ileum opens into small intestine। तो ileum opens into small intestine doesn't really make sense। Why? Because ileum तो खुद small intestine का एक पार्ट है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया, सेकंड तो गलत था ही। फिर चौथे स्टेटमेंट पे चलते हैं, which says serosa is the innermost layer of the alimentary canal। अब सीरोसा जो है वो एलिमेंट्री कैनाल की इनर मोस्ट लेयर नहीं है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज व्हाट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम एंड द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको तो हम म्यूकोसा बुलाते हैं, तो ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। करेक्ट, तो एक बार क्विकली मैं आपको इसकी इमेजेस दिखा दूं। ये है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली द एलिमेंट्री कैनाल इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, anteriorly opening with the mouth and posteriorly ending with anus। Okay, talking about ileum, ileum as I said is this lovely reddish part that you are seeing here। It is the longest part of small intestine, almost like about 3.5 meter long। jejunum की बात करें तो it is close to 2.5 meter long and duodenum is characterized by its C shaped structure like you are seeing here, so we call it as C shaped
structure, right? It's basically a C-shaped tubular structure, which is the start part of the small intestine. Going further, there was mention of appendix. Appendix is basically a worm kind of projection, a thin projection which is coming out from cecum. What is cecum? Cecum is a pouch-like structure जो कि present होता है starting part of the large intestine पे. Okay, और ये कहाँ पर से start होता है या किससे connected होता है? ये connected होता है हमारे इलियम से, और इनके बीच में जो connecting valve होती है उसे हम बुलाते हैं इलियोसीकल valve. इस टर्म का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बट ताकि आपको ये कनेक्शन समझ में आए इस वजह से मैंने ये पॉइंट यहाँ पे डिस्क्राइब किया. और चलते हैं जो लास्ट स्टेटमेंट दिया गया था अबाउट सिरोसा, तो ये है आपके लिए एक ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ दी होल एलिमेंट्री कैनाल टेक्निकली स्पीकिंग. लेकिन यहाँ पर स्पेशली जब आप लेयर्स को देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसे हम बुलाते हैं म्यूकोसा. इट बेसिकली लाइंस द ल्यूमेन ऑफ द होल एलिमेंट्री कैनाल. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिरोसा जो होती है वो सबसे बाहर की साइड प्रेजेंट होती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ स्क्वोमस एपिथेलियम एंड दी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, ये आप याद रखेंगे. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये सब मस्कुलर लेयर, ये जो भी हमारी मस्कुलरिस होती है, सब म्यूकोसा होती है, सिरोसा है, म्यूकोसा है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं या बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए क्या हो गया? ऑप्शन ए, दैट इज इलियम इज अ वेरी हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. Let us have a look at this question. Ray florets have. So if you try to remember what exactly are ray florets, you would remember that in case of in the inflorescence of sunflower, there used to be two types of florets, right? Centrally present disc florets and peripherally present ray florets. So if you see this image, yeah, this one, these are going to be the disc florets, and the ones that are these, you know, lovely petal kind of looking structures are what are called as ray florets. So if you see the arrangement of these ray florets, they would have basically got inferior ovary. Now this is a very 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 kind of a straightforward of a question, which is simply based on the fact that you have learned in the morphology chapter, right? Morphology of flowering plants. So the right answer here would be that they have inferior ovary, which means what? They would have epigynous flower. So the right answer here would be option C. Let us have a look at this question. Which of the following is put into anaerobic sludge digester for further sewage treatment? Now this question is basically based on the unit biology in human welfare. Here we are talking about the treatment plant. It can be a wastewater treatment plant. It can be a sewage treatment plant. So if you try to recall, there are basically three major stages of this treatment plant. There is a primary treatment, secondary treatment, and a tertiary treatment. In the primary treatment, what we do is allow the filtration or the basic sedimentation to happen, okay, where basically all the mota kachra and the big sized gravels and all the stones etc are going to get removed, right? This is a basic filtration and a sedimentation technique, the primary treatment. Talking about the secondary one, it is basically a biological technique. It's going to be involving addition of air etc, so there is going to be a good amount of aeration, there is going to be good mixing of the whole sewage, and then this is followed by a tertiary treatment where we are going to take care of the phosphates and the nitrates that are going to be present in water. Okay, so here the question is asking about which of the following things that are listed down here are going to be put into an anaerobic sludge digester for the further sewage treatment. Okay, so let me try to help you recall this thing. Right, let us look at this. So there is a primary water treatment plant from where the sludge that we obtain. Okay, so what is sludge exactly? It's basically a semi-solid slurry kind of thing which would have the microbes that would be present in this case, because microbes would also have a tendency to settle down with this whole sedimentation that is happening. Okay, so the sludge that is obtained here is what is called as primary sludge. Now this is not the sludge that we are concerned with. We are concerned with something that is formed as an activated sludge, which is what is very very rich in microbes, which allow the further degradation and sewage treatment to be continued beautifully when you basically talk about biological treatment. Okay, so what you have got here is primary sludge. Now from here onwards, whatever is going to be remaining is going to be further transferred into the secondary treatment plant. So this is the secondary water treatment plant. Now from here onwards, what we are going to do is, after we allow the secondary treatment to happen,
Whatever microbes and flocks are being formed, these flocks, some portion of it is used as an inoculum and it is going to be re-entered in the same tank so that further treatment can continue. But a majority portion of this activated sludge, this is what I'm referring to as activated sludge, where we are going to use the flocks that are very very rich in the microbes which are carrying out this kind of treatment, right? So this activated sludge, a majority portion of that is going to be fed into the anaerobic digester, right? Where is it going to be fed? In the anaerobic sludge digester. Once again, in the settling tank, you are going to get, this is a part of your secondary treatment, a result of the secondary treatment, you are going to get activated sludge. Some part of it is going to be re-inoculated, like I said here, and most part of it would be taken to the anaerobic sludge digester. From here, there is going to be a lot of breakdown of organic matter that is going to be happening, and ultimately there is going to be release of basically methane, etc., which can be used for biogas plant for biogas production. And then further, whatever water is going to be released can be either treated for tertiary treatment in order to make it potable, if at all possible. Otherwise, it's going to be released into the water bodies. So what is going to be the right answer for this question? Which of the following is put into anaerobic sludge digester for further sewage treatment? The answer is going to be activated sludge. Let us have a look at this question. The number of substrate level phosphorylations in one turn of citric acid cycle is. Now, what is citric acid cycle? It is also called as Krebs cycle, right? It's a very important, very, very essential part of aerobic respiration, where basically complete degradation of glucose that had started with glycolysis is going to happen the complete degradation is going to happen in order to release out carbon dioxide and water. Okay, now the very important point is that we are talking about one turn of citric acid cycle. Now this is where most of the children make mistake. अब यहाँ पर जो है ना, आपको ये समझना है कि आप एक टर्न ऑफ क्रेब साइकिल की बात कर रहे हो, ना कि दो टर्न ऑफ क्रेब साइकिल which would have happened अगर आप एक ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे. So if you try to recall, what happens is कि सबसे पहले जब आप स्पेशली एरोबिक रेस्पिरेशन की टोटल प्रोसेस की बात करते हैं, the glucose molecule is going to be broken down into two molecules of pyruvic acid, जिसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एंड ये पायरुविक एसिड जो है ये एंटर करता है इनटू ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, लाइक आई सेड, टू फॉर्म एसिटाइल कोए, एंड ये एसिटाइल कोए जो है एंटर करता है फिर क्रेब्स साइकिल में इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. और जब ये क्रेब्स साइकिल शुरू होती है, उसके बाद अल्टीमेटली बिकॉज इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, ये पूरी साइकिल होते होते साइमल्टेनियसली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज आउट होते हैं एंड कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसे हमने स्टार्ट किया था ग्लूकोज मॉलिक्यूल से. अब यहां पर क्या होता है कि क्योंकि दो एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल बने हैं, क्योंकि दो पायरुविक एसिड थे, इस वजह से टेक्निकली स्पीकिंग एक ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए आपको दो क्रेब साइकिल लगेगी. ओके, लेकिन क्वेश्चन में यहां पर एक क्रेब साइकिल के बारे में पूछा गया, एंड यही जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं इन लाइक व्हाइल रीडिंग दिस क्वेश्चन. तो पहली चीज तो एक ये ट्रिक हो गई. दूसरी चीज है जो आपको समझनी है, वो होती है व्हाट इज एग्जैक्टली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. तो आपने पूरे रेस्पिरेशन चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन पढ़े हैं. पहला होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और दूसरा होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. दोनों में फर्क क्या है? अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझिए. अगर आप एक बार ये पॉइंट समझ गए तो आपका ग्लाइकोलिसिस का सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एंड यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं बहुत सिंपल हो जाएगा. अच्छा, यहाँ क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जब हम बात करते हैं, यहाँ पे जब भी एटीपी बनता है ड्यू टू फॉस्फोराइलेशन, ओके, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में एसएलपी करके लिख देती हूँ. यहाँ पे जब भी एटीपी बनेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन, ये बनता है एडीपी से और एक फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट से, एंड ना कि डायरेक्टली इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट विच मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन टेंड टू मिस. प्लीज ये पॉइंट याद रखिए, इसलिए आप अगली बार जितनी भी बार ऑक्सीडेटिव देखेंगे एंड सबस्ट्रेट लेवल देखेंगे, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. यू वुड बी एबल टू बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंड दिस, एंड यू कैन इन फैक्ट हेल्प एवरी अदर चाइल्ड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी बेसिक कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस. सो आई वाज टेलिंग यू ऑल कि एसएलपी में क्या होता है कि एक एडीपी कंबाइन होता है किसी भी फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट के साथ,
एंड उसमें से वो फॉस्फेट उठा करके फाइनली बना देता है एटीपी। लेकिन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, बेसिकली एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सिंपली कंबाइन होते हैं और एटीपी बना देते हैं। इसीलिए क्वेश्चन में पूछा गया है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के बारे में, क्योंकि क्रेब्स में जो होता है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ही होता है, द मेजर थिंग, राइट। ऑफ कोर्स डिफरेंट स्टेजेस पे ऑक्सीडेशन भी होता है, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप क्रेब साइकिल अब यहाँ पर याद करें, ये आपके सामने पूरी क्रेब साइकिल है, तो यहां पर क्या होता है इस रिएक्शन में, दैट इज व्हेन बेसिकली सक्सिनिल CoA गेट्स कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट। ये होता है एक एंजाइम विच इज कॉल्ड एज सक्सिनिल CoA सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में। मैं यहाँ पर इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट भी साथ साथ रिवाइज हो जाए इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी है। तो सक्सिनिल CoA सिंथेटेज क्या करता है, ये बेसिकली सक्सिनिल CoA को सक्सिनेट में कन्वर्ट करता है, एंड इस रिएक्शन के दौरान जो है जीटीपी मॉलिक्यूल एक बनता है। ये दिख रहा है आपको, राइट। ये जो जीटीपी बना है इसमें से फॉस्फेट एडीपी लेता है और फिर एटीपी बना देता है। तो हुआ ना वो कॉन्सेप्ट सही जो मैंने आपको समझाया था कि एग्जैक्टली यहां पर क्या हो रहा है कि एटीपी बन रहा है फ्रॉम एडीपी एंड अ फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट, एंड फॉर अस द फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट राइट नाउ इज जीटीपी। समझे आप बात? तो कितनी बार हो रहा है ये जो मैंने आपको रिएक्शन बताया पूरी क्रेब साइकिल में, ध्यान से देखिए, ये सिर्फ एक बार हो रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन से के लिए? ऑप्शन 1, राइट। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू G1 फेज और द गैप 1 फेज ऑफ इंटरफेज। ओके, तो आपको पता है कि हमारी जो सेल साइकिल होती है, ये बेसिकली सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर का क्वेश्चन है। हमारी जो सेल साइकिल होती है उसके दो मेजर फेजेस होते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज सबसे बड़ा फेज होता है विच लिटरली ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट अबाउट 95% ऑफ द टाइम ऑफ द होल सेल साइकिल। ओके, ह्यूमंस के केस में अगर हम एवरेज लें, अगर हम एवरेज 24 आवर्स लें, तो 24 आवर्स का 90 to 95% ऑफ टाइम जो होता है वो सिर्फ इंटरफेज में जाता है। इंटरफेज जो होता है वो फर्दर डिवाइडेड होता है हमारे G1 फेज में, S फेज में और G2 फेज में। G1 फेज में सेल बहुत ज्यादा एक्टिव होती है एंड बहुत ज्यादा अच्छे से प्रोलिफरेट कर रही होती है क्योंकि वो अभी फ्रेश डिवीजन से बनी है। तो G1 फेज में द सेल बिकम्स हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव, बट द थिंग दैट डज नॉट हैपन इन द G1 फेज इज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और द डिवीजन ऑफ द सेल, राइट। तो यहां पर जो चेंज नहीं हो रहे हैं वो क्या है, रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता है। तो चलिए एक बार ऑप्शंस को देखते हैं। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, वी आर टॉकिंग अबाउट G1 फेज, याद रखिए। हाँ, सो ऑप्शंस है हमारे, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, वेरी मच द सेम पॉइंट दैट आई जस्ट स्टेटेड। फिर आता है न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, न्यूक्लियर डिवीजन यहां नहीं होता है। न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो कहां पर होता है, कैरियोकाइनेसिस में होता है ना। तो बेसिकली रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा हमारा एस फेज में, एंड फाइनली जब सारा काम हो जाएगा, सेल प्रिपेयर हो जाएगी, तो सेपरेशन ऑफ द न्यूक्लियस और डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज गोइंग टू हैपन इन द फेज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एम फेज, राइट। तो ये सही आंसर नहीं होगा। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस नहीं, ये हमारे एस फेज में होता है। ओके, फिर उसके बाद है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल टेक्स प्लेस। तो ये तो बेसिकली बहुत ज्यादा ड्रामेटिक फेज है जिसे हम बेसिकली हमारा एम फेज बताते हैं, राइट। तो बहुत सारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसअपियरेंस ऑफ मेम्ब्रेन, रीअपियरेंस ऑफ मेम्ब्रेन एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग, ऑल दीज ड्रामेटिक ब्यूटीफुल चेंजेस हैपेंस इन द एम फेज, राइट, व्हिच इज दैट व्हिच हैपेंस फॉर दैट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। तो ऑप्शन डी भी इस क्वेश्चन के लिए तो गलत स्टेटमेंट है। तो अगर मैं आपको याद दिला दूं तो जैसा मैंने आपको बोला, पूरे इंटरफेस का G1, S और G2 मैक्सिमम टाइम ले लेते हैं एंड M फेज में मेन डिवीजन होता है। ओके, बट G1 फेज में देयर इज नो रेप्लिकेशन दैट हैपेंस। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन A. Let us have a look at this question. Which of the following pairs is of unicellular algae? So we are looking at the pair of unicellular algae and not at just one option, अगर इसमें से कोई सही है तो यहाँ पे जो जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिस्टेड है आपको देख के बहुत ही क्लियरली अपने प्लांट किंगडम चैप्टर की याद आ रही होगी, जहां पर आपने algae के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ा है एंड ऑल्सो आपने उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये क्या क्या है, एनाबीना एंड वॉल्वॉक्स, क्लोरेला एंड स्पिरुलिना, लैमिनारिया एंड सार्गैसम, या फिर जेलिडियम, या फिर एंड ग्रासिलेरिया। तो बेसिकली मैं आपको याद दिला दूं कि क्लोरेला और स्पिरुलिना जो है ये बेसिकली हमारा राइट आंसर है इन टर्म्स ऑफ यूनिसेल्युलर एल्गे।
ठीक है। बट एक बार बहुत जल्दी से इन सब एल्गे की इमेज भी देखते हैं और याद करते हैं कि कौन कौन से एल्गे क्या क्या है। तो पहली चीज तो स्पिरुलिना और क्लोरेला, स्पेशली आपने इनको कहाँ पढ़ा है? ये यूनिसेलुलर एल्गे तो है ही, पर आपने इनका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है या फिर जो इंपॉर्टेंस है वो कहाँ पढ़ी है? दे आर बेसिकली वेरी 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 हाईली रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, दैट इज व्हाई वी मेक लिटरली समथिंग कॉल्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन, जो आपने 12th स्टैंडर्ड में एप्लीकेशन पार्ट में पढ़ा है। एससीपीज बनाने के काम आते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट देम इज दैट दे आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर रिचनेस इन प्रोटीन बाय द स्पेस ट्रैवलर्स एक्सेट्रा। तो जो भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, जब भी वो स्पेस में जाते हैं विद अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ एवरीथिंग दैट दे टेक अलोंग, स्पिरुलिना एंड क्लोरेला जो है वो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन अपने साथ लेके जाते हैं। आगे चलते हैं बाकी ऑप्शंस की तरफ, जो कि इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं, इनकरेक्ट पेयर्स ऑफ यूनिसेलुलर एल्गे हैं। पहली चीज एनाबीना, एनाबीना जो है वो एक फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया होता है, ठीक है। सो दिस इज फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। वॉल्वॉक्स में याद दिला दूं, वॉल्वॉक्स जो होते हैं वो लिटरली स्फेरिकल कॉलोनीज बना के रहते हैं। हर एक कॉलोनी में ऑलमोस्ट अप टू 50,000 सेल्स भी हो सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन व्हाट ब्यूटीफुल कॉलोनीज दे वुड बी मेकिंग। सो दिस इज योर वॉल्वॉक्स। फिर आते हैं लैमिनेरिया पे। लैमिनेरिया एक सीवीड है, इट्स अ टाइप ऑफ ब्राउन एल्गे, राइट। आगे चलते हैं सार्गासम। सार्गासम भी एक टाइप ऑफ ब्राउन एल्गे ही है। टॉकिंग अबाउट जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। जेलिडियम और ग्रासिलेरिया जो है ये रेड एल्गे हैं, आपको इनके कलर से भी बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में आपने क्या पढ़ा है कि दे आर बेसिकली यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट समथिंग कॉल्ड एज agar agar or synthesize something called as agar agar, which is used as a solidifying agent in making bacteriological medium in microbiology industry। और थोड़ा सिंपल बताऊं तो जेलीज वगैरह के बनाने में उनका जो सॉलिडिफिकेशन होता है दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ अ कंपोनेंट कॉल्ड एज अगार अगार, राइट। तो अगार अगार से डिराइव होकर के ऐसी चीजें बनती है जो सॉलिडिफिकेशन में हेल्प करती हैं। अगार अगार इनफैक्ट इन इटसेल्फ इज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। So children, you have understood what all kind of questions have come in 2020 NEET paper, and you have also understood what is the trend of the questions and the chapters and the units in the past 5 years. Try to attempt a question just the way I told you to, just the way I explained you to. In order to understand and have confidence over a question, you really need to understand why incorrect options are incorrect and why that correct option is correct. Okay, try spending some more time in practicing the questions very well so that you become completely confident. We will meet up next time very soon. Till then, keep learning.